Okay, we're starting from here. How it is represented? So we can represent Q in two ways. As I told you that Q does not have its own representation in computer memory. So if you want to implement the Q in any language or C++ or the Java, you have to use one of these two methods. So array, either you can use the concept of array to implement, or you can use the concept of linked list, right? So through these two data structures, you can be able to implement the concept of Q. So let's start with the implementations of Q using linked list concept. So if you can see blindly that it is a very much simple linked list. There's no concept of the queue, right? Is it? But when you use this concept front and rear, then it will be considered as a queue because we don't have concept of front and rear in linked list, right? So if you consider this your node 1, 2, 3, and 4, but we consider this is your rear point and this is your front point. So this was your first data inserted, this is the second, third, fourth, and the new data will be inserted from here. Okay, so rear is the point where always new data is being inserted. रेयर वो पॉइंट होते हैं जहां से न्यू डेटा आपका क्यू में इंसर्ट होता है. द अदर पॉइंट इज एंड पॉइंट इज द फ्रंट वेयर डेटा इज रिमूव्ड. So the first node which is inserted, that will be removed at the first using concept of queue. Okay, so if you want to implement the queue using linked list, you must consider these two variables, front and rear. So if you can see here, this is your queue. So if you want to insert a new queue, basically in queue is the function which is used to insert the new value or the data in queue. This is a function used to insert the new data in the queue. So let's suppose we want to apply in queue. Currently, if you can see here at this position, the front is pointing to this value, the address is 3901. Okay? Yes. And the rear represents to this one. So after inserting new node, this is our new node which we have inserted. So the value of rear will change, but value of front will remain same. Because पहले in queue इसको point कर रही थी. Once new value has been added in the queue, now the value of rear will point to the new data, right? Before it was pointing to this one, now it will point to this one. So let we apply Dequeue. If we apply Dequeue, so you can see here, ये हमारी same queue है. If we want to remove, which value will be removed? This one, this one? Yes, because we always remove from front, but we always insert from rear end. So when we apply Dequeue is basically a function which is used to delete the value from queue. Right? So when we remove this one, now the value of front will change. Now front इसको point करेगी, but rear will remain same. The value of rear was 1001, and here after removing this data, the rear is 1001 same. But the value of front has been changed. Before front was pointing to this one, now this has been removed from the queue. Now front will point to this one. Now let's suppose if remove the C, the front will point to B, because this is now the last one, first A. And then after removing the B, it will pointing to the A, and so on. Okay. So at this point, we have learned two things. What? Number one, if you insert the new data, the value of rear will be changed, and if you insert or if you delete the data, the value of front will change. I don't think so. No, we don't have any kind of device. Why it is moving? It should not. It should not move.
So, okay, if you can see here, now let's talk about the representations of Q using array. ठीक है? So usually these Qs are mostly represented in array. Why? Because array is more easier than linked list. So you have already implemented the array and linked list. So which one is more easier? Array. You will be more comfortable with array as compared to the linked list. So most of the time, linear array is used to represent the queue. Each of our queues will be maintained by linear array queue. That will be array, but by using few variables, concept of rear and front, it will be a queue. So let's suppose these are the rules we need to understand before implementing it. Number one, front contains the locations of front element of the queue. Is it true? Yes. And the other one is the rear, contains the location of the rear element. जो लास्ट इंसर्ट होता जाता है वो rear होता है, ठीक है. जो फर्स्ट होता है वो फ्रंट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे आपका एरे है, ओके. सो ये आपका फ्रंट कहलाएगा और ये आपका क्या है? So from this side we are going to insert the data, new data, right? For example, 20 and 30. So from this side we are going to insert the data, और यहाँ से आपके क्या होता है? Data is going to be removed. So if you want to remove, so it will be removed first 10. Now front will point to 5 because 10 has been removed, right? But rear will remain same. Let's suppose it is 0, 1, 2, 3. So at this position, rear is equal to 3, right? Rear 3 है. और यहाँ पे if 10 is there, the front will be 0. Front किसको point कर रहा है यहाँ पे? 0 को. Let's suppose we are going to remove it. Let's suppose what we are going to do? We are going to remove it. 10 has been removed. Okay. Now this is your array. 5, 20, 30. Okay, this value has been, ये आपका 1 पे था, ये 2 पे था and 3 पे, right? So now your front will point to, because this is now a front, right? So if you can see here, after that, removing this one, the front may point to this one. And after removing this one, the front may point to this one. Okay. So if you can see here, if front is equal to null, indicate the queue is empty. Okay, no value has been inserted. So rule number 1. Whenever an element is deleted, the value of front is increased by 1. Is it true? Before the value of front was 0, we removed 10. Okay, where is, can I please have? So let's suppose we are going to implement this rule. Okay, this is our array representation of Q. Please downtown. Okay, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30 and 40. Okay, this is your rear. Don't talk. Front. So front is at this position, it is 0 and rear is equal to 3. So remember, rule number 1. देखिए, when an element is removed from the queue, the value of front will be increased by 1. So if you can see here, currently front is 0. Now let's suppose 10 has been removed. Now value of front will be increased by 1. 0 plus 1, 1. Now front will point to this one.
Okay? Now let's suppose we want to remove, which value will be removed next? Which one? This one? Now after remove value of 1 plus 1, 2. Now current will point to this one. And it will so on. So ये rule कहता है कि whenever any value is removed, the value of current will be increased by 1. Rule number 2, when an element is added, the value of rear will be increased by 1. Let's suppose this is the end where values are being inserted. I want to insert a new value, let's suppose that is 50. So it will be stored at 4. So rear will be plus 1. Now rear will point to this one. Okay, if I want to insert a new value, let's suppose 60, it will be placed after 5. 4 plus 1. So rear now will point to this one. Okay? Yes, sir. Yeah, this is the concept behind this one. So if you can see here this diagram, so this is our array, this is our front, and this is our rear. So value is being added from this end, right? So if you want to remove, so always values are removed from front. Front से value remove होती है, rear से add होती है. So if you can see here at this situation, front is equal to 0 and rear is equal to 3. Okay? At the initial stage, the front is equal to 0 and rear is equal to 3. Let's suppose we want to remove A. After removing one, recall the rule 1. Any value is removed, the value of front will be increased by 1. Now front is 1. Okay? Again, let's suppose we want to insert a new value that is placed at 3. So rule number 2, when new value is inserted, the value of the rear will be increased by 1. So 3 plus 1, 4. The value of 4. And again we have removed B, so value of front is increased by 1. Before it was 1, now it is 1 plus 1, 2. So on. This is how it works. This is the queue. Simple array में ये concept नहीं था, right? ये क्यू में फ्रंट एंड रेयर का concept. So if you can see here, do we have any value? So we can say that at these situations, rear is null and front is null. Minus 1 or null, same thing. You can not write here 0. 0 is index here. If 0 means this value, this position, right? So if you can see here, we don't have any value, so rear is null, front is null. But if we have number of values, यहाँ पे rear ये 3 है और front 0. Why? Because front represents or points to this value now, and rear points to this value. Clear? I hope so, right? Yes, sir. This is a very much easy concept, even though this is a little bit more easier than linked list. Okay, so now let's suppose algorithm for inserting in a linear queue. Let's suppose this is our queue A, B, C. Okay, so in this situation, front is equal to 0 and rear is equal to, it should be 2. Yes, maximum size is 12. So rear should be, it's 2. I'm sorry, it's not 3, but rear should be 2. Yes. Okay. So our purpose is to insert a new value here. Okay. So let Q maximum size. If you can see here, it is exactly array. जैसे हम array और उसकी size देते हैं. ठीक है? Is an array of implementing the linear queue. ये एक array है. How do you know that this one is array? Can anybody tell me how do you know this one is array? Exactly, because of these square brackets, we can say that this is array. Okay, but this array is used for the linear queue, and num is the element to be inserted. We want to insert a new element, okay, in a queue. So front represents the index number of the element at the beginning of the queue. Okay, and the rear
represents the index number of the elements at the. So here foreign beginning को represent कर रहा है, that is 0, and rear the last number जो भी. Okay, so we can say that maximum from size क्या है 0 to 12, means 12, right? So this is how we can insert. If rear is equal to size 1, then Q is overflow. Okay, ये overflow चेक करें कि भाई क्यू में जगह है कि नहीं. और मैक्सिमम क्या है, मैक्स की साइज वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 11. अगर रेयर यहाँ पे 11 पे है तो इसका मतलब वी डोंट हैव स्पेस हियर, सो वी विल बी अनएबल टू इंसर्ट न्यू वैल्यू. कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ये इस तरह है कि देखें बिल्कुल ये इफ लेट्स सपोज यहाँ पे रेयर हमारा एट दिस सिचुएशन रेयर अब हमारा 2 है. लेट्स सपोज हमारा रेयर 12 होता 11 होता तो मींस कहां पे रेयर किसको पॉइंट कर रहा है 11 को. लेट्स सपोज यहां पे डेटा कोई ना कोई है. सो और मैं कोई और एग्जांपल दे दूं. ये मैंने एक डोंट टॉक आवाज आ रही पीछे से. सो यहां पे 10 20 30 and 40 0 1 2 3. So at these situations this is our rear is equal to 3 and this is our foreign and it is 0. Now I want to insert a new value. I am checking that if rear is equal to, let's suppose size is कितनी है 1 2 3 4. ये साइज है की. सो साइज माइनस 1 4 माइनस 1 मीन्स 3. तो सी आउट वी डोंट हैव एनी स्पेस. ये एरे ऑलरेडी फुल है. तो देखें इस इन दिस सिचुएशंस ये ट्रू होगा राइट. रेयर की क्या वैल्यू है 3. साइज 4 माइनस 1 3. गुड. ओवरफ्लो यू कैन नॉट इंसर्ट. हम इंसर्ट कर सकते हैं नहीं. अगर यहाँ पे स्पेस है तो फिर कर सकते हैं. सो आई एम चेकिंग दिस सिचुएशंस इन एफ. ओके. पर इन दिस सिचुएशंस इन दिस एग्जांपल this is false because rear is 2 and maximum size is 12. So it is empty. We have space to insert, right? So इस scenario में ये false हुई. So step number 2, read num to be inserted. What value you want to insert? Ask from the user. Insert the value to insert in this queue. So read करनी है, ठीक है. So let's suppose user insert कर रहा है. Let's suppose D. User want to insert D. Okay. So देखें set rear is equal to रेयर. अगर डी यहां पे इंसर्ट हुआ तो रेयर की वैल्यू 3 हो जाएगी. ओके. ओके. सेट क्यू नम और उस पे हमने जो न्यू वैल्यू दी वो इंसर्ट हो जाएगी. यहां पे आपकी थर्ड पे आ जाएगी. थर्ड पे हाँ यहाँ पे इंडेक्स थर्ड पे आ गई मतलब वैल्यू फोर्थ होगी हमारी. पहले हमने क्या किया यूजर से नम इंसर्ट किया. लेट्स सपोज num is equal to D. This is inserted by the user. Okay. Now हमने rear की वैल्यू इंक्रीज करनी है. R is equal to R plus 1. Before rear was 2. Now rear will be 3. तो हमारे क्या करते हैं Q और उसके R में जो हमने न्यू डेटा इंसर्ट किया है वो इंसर्ट कर दे. सो Q में R की वैल्यू 3 है. ठीक है. वहां पे हमने ये वैल्यू है D that will be inserted. So that D will be inserted at index 3. यहां पे D आएगा. रेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी. If current minus 1 then set current is equal to 0. Can anybody explain what is purpose of step number 5? Raise your hand. Read it first and try to understand. If current is equal to minus 1 then set current is equal to null. Okay. ये चेक करेगा अगर फ्रंट की वैल्यू 0 से कम है तो उसको 0 की वैल्यू सेट करें. Okay, anybody else? Yeah, that one.
डोंट हाँ, वन बाय वन। एग्जैक्टली वो आप सही कह रहे हैं। सो लेट सपोज हो सकता है कि करंट हमारा नल थी, मीन्स द क्यू वाज एम्प्टी। तो दिस डेटा विच वी इंसर्टेड डी, दैट कुड बी द फर्स्ट डेटा। तो आपका क्या रहेगा, आपका फरंट को जीरो कर दें कि ये हमारा फरंट जीरो होगा, और रेयर तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर -1 होता तो -1 को +1 कर दें, क्या होगा, जीरो होगा ना। अच्छा, इसको मैं और एलाबोरेट करूं थोड़ा। लेट सपोज, हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। Okay, so let's suppose this is our, keep silence, this is our array. Okay, so 0 1 2 3, this is empty, so we want to make it q. So our current is equal to -1 and rear is equal to -1 because this is null. ये null को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, लेट सपोज वी वांट टू इंसर्ट दिस वन, इंसर्ट द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट इन क्यू, यूजर ने डी इंसर्ट किया, लेट सपोज। ओके, हमने क्या किया, रेयर की वैल्यू क्या की, इंक्रीज की दी। अब रेयर की वैल्यू क्या है, कंसीडर दिस सिनेरियो प्लीज, इसको हम कर रहे हैं -1 +1, रेयर की वैल्यू अब क्या हो गई, अब रेयर इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, क्यू में 0 पे डी स्टोर कर दे, सही है, बिकॉज वैल्यू ऑफ आर इज नो 0 इन क्यू, दैट विल बी स्टोर्ड। अब यहां पे आ गया है, यहां पे आ जाए, इफ यू कैन सी हियर, इफ करंट इज इक्वल टू -1, यहां पे करंट -1 है, यस, देन करंट इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दें, एफ को 0 कर दें, यस, इस सिनारियो में ट्रू थी। ओके, अब देखें यहां पे हमारा एक ही डेटा है, वन यू वन डेटा, करंट भी इसको पॉइंट करेगा, रेयर भी इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ गया? सो दिस इज फॉर द नल, हम चेक करें, हो सकता है Q was null and the data which we have inserted that could be the first data. So इसलिए करंट 0 हो जाएगा और रेयर भी 0 and end up. So I think this one is more easier as compared to the linked list. Okay, so just you need to initialize the values, or if we implement this one, it is very much easier. Using C, you can implement this one. Simple, what you have to write, let's suppose, keep silence, hash include IO stream. Okay. Welcome. So first is we want to declare Q, ठीक है, इसकी साइज देते हैं, let's suppose 5. Yes, this is array. If you can see here, this is array, but I write here Q. Okay, is equal to, let's suppose 1 2. So this structure will be represented 1 2 3 4 5. So currently 1 2 has been inserted. This is 0 1 2 3 4. Okay, yeah. So we need two variables, front and rear, right? Int f is equal to, आप यहाँ पे करें 0, हाँ 0, int rear जी, यहाँ पर डायरेक्ट फ्रंट को पॉइंट करना, front Q, no, wait. So in this situation, so rear is 1, ठीक है, आपका इसको फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, रेयर इसको पॉइंट कर रहा है। नाउ
the question is that we want to insert a new value. So we want to check if, yes, let's suppose I'm going to write size is equal to कितनी है 5 है array की size. If size is equal, if rear is equal to, don't talk please, सुने पहले. If array rear is equal to size minus 1 means we don't have space, and C out over. So, but in this situation, we don't have this scenario. We have a space, right? So it will come to step number 2. Read number. We can have here int num. So we can CIN. So this will ask from the user. Okay, new value user से पूछेगा insert करें. Once it has been inserted, now we need to increase value of rear. Okay, so what will write? Rear is equal to, yes, plus 1. Okay, before rear was 1, now your rear will be 2. Now you can easily insert the new value. How? Q कहाँ पे इंसर्ट करनी है? जहां पे हमारा rear है. क्या वैल्यू करनी है? num. ओके, लेट्स सपोज यूजर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना है. लेट्स सपोज 3 यूजर इंटर करता है, तो ये कहाँ पे स्टोर होगी? क्यू में. ये हमारा क्यू है अरे, उसका रेयर की वैल्यू 2 है, वहां पे आपका 3 इंसर्ट. ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5. इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट को 0 कर दे. ये आपने इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 मीन्स अगर फ्रंट की वैल्यू नल हो तो फ्रंट को 0 कर दे. -1 यहां पे 0 इंडेक्स है, दैट्स राइट. ठीक है ना? So, but in this situations, front is not null, so this will not execute. ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? When our queue is empty. जब queue empty होगा तब front की वैल्यू null होगी. So this is how we can easily implement, right? Now the other one is how we can remove from the queue. I hope so this one is clear. Insertion is clear. So the next one is, let's suppose, even though, okay, this is our scenario. This maximum size is 12, the front is 0, the rear is 2, that's correct. Now we want to remove the data. So can you tell me which data will be removed? Raise your hand. कौन सा data remove होगा if we want to remove this one? Which data will be removed? Yes, A. Okay, front वाला या rear वाला? Front वाला, of course. Okay, so let's suppose same technique. This is our Q. Next ये array है Q के लिए. ठीक है, linear num is the element to be deleted. Which you wanna delete? Of course, it will be deleted first A. Okay, the linear queue front represents the index number of the elements at the beginning, and rear represents the index number of the element at the end. Okay, so if front -1, then what does this mean, gentlemen? इसका मतलब क्या है? Yes, what does it mean? If front is equal to -1, what does this mean? क्या null? We are checking that either this queue is empty or not. अगर ये empty होगी तो आपका ये front क्या होगा? Null होगा. ठीक है ना? As I told you here,
देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी है तो आपका फ्रंट -1 होगा। तो चेक करें, अगर फ्रंट -1 है तो डिलीशन ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, यू आर अनएबल टू डिलीट। कोई चीज है ही नहीं, किसको डिलीट करेंगे? इसको, इस सिचुएशन को क्या करते हैं? अंडरफ्लो, then why it is low? Okay, it should be underflow. Okay, so if this one, in this situation, this if is false because current is 0, so ये नहीं चलेगा। This step 2, set num is equal to q current। जो करंट पे वैल्यू पड़ी है वो नम को मिल जाएगी। करंट पे क्या पड़ा है? ए, दैट विल बी असाइन टू ए। राइट, डिलीट एटम नम, ये डिस्प्ले कर दे कि नम, ये जो 2 है ये ए है, हैज बीन रिमूव। तो उसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दें, 0 + 1 1, नाउ योर करंट विल पॉइंट टू बी। ओके ओके, इफ करंट इज ग्रेटर देन रेयर, अगर करंट जो है रेयर से बड़ा है तो क्या कर दे? अच्छा, इसको भी हम देखते हैं, इस सिचुएशन को हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। शुड आई इरेज दिस वन? राइट, ओके, व्हाट इज इट, व्हाट आर यू डूइंग? अब देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना इसे। ऑलरेडी आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको देख लेना थोड़ा। जब टिक निकल गई है शेयर कर देना। सो नाउ लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन step number 5. This is situation what I have. Let's suppose 10. So यहां पे करंट क्या है? रेल, one by one. मेरे ख्याल में जब से मैंने ये कैमरा लगा, सब किसी को अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने का बड़ा शौक है। हाँ, क्यों? मेरा पता नहीं, चेक किया कि आ भी रही कि नहीं? अरे अब क्या होगा? हाँ, रेयर की वैल्यू चाहूंगी रेयर की वैल्यू चाहूंगी। रेयर, दिस सिचुएशन रेयर की वैल्यू क्या होगी? रेयर नाल, ओके, -1। हाँ बाबा, बेटा रेयर की भी 0 होगी, तो करंट भी यहाँ पे अभी एक वैल्यू है तो रेयर भी है, दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, रेयर की वैल्यू 1 होगी, तीसरी वैल्यू स्टोर होगी, रेयर की वैल्यू ओके, आई एम सॉरी। स्टेप नंबर 5, इफ okay, leave it. If current is greater than रेयर, तो क्या कर? -1 ओके। लेट्स सपोज यहां पे हमने क्या की है? हमने लिखा है नम इज इक्वल टू क्यू करंट। ये करंट की वैल्यू 0 है, क्यू एट 0 10 है, दैट विल बी असाइन टू नम को। नम को वैल्यू मिल गई, नाउ वी डिस्प्ले राइट, नम हैज बीन रिमूव। अब क्या करंट की वैल्यू क्या है? अपडेट कर दें, ठीक है, रिकॉल द रूल। जब वैल्यू रिमूव करेंगे करंट विल बी इंक्रीज बाय 1। अब यहां पे करंट क्या हो गया? अब करंट इसको पॉइंट कर रहा है, रेयर इसको पॉइंट कर रहा है। भाई दिस हैज बीन रिमूव्ड, दिस हैज बीन रिमूव्ड, तो यहां पे गड़बड़ हो गई। रेयर को या तो हमेशा आगे होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यहां पे करंट आगे हो गया,
अब क्या करना है, यहां पे देख रहे हैं, इफ करंट इज ग्रेटर देन रियर, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कर, इसका मतलब है सारी वैल्यूज डिलीट हो चुकी है, एक ही वैल्यू थी, ये डिलीट हो गई, अब ये आपका नल है, तो करंट -1, रेयर -1। अब जिस सिचुएशन में ये 10 रिमूव हो गई, अब ये करंट -1 हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा, एरे वैल्यू रीसेट। ये इस सिचुएशन के लिए ना, ये इफ स्टेटमेंट, ठीक है। आई थिंक नाउ आई शुड राइट द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर इट, राइट। So now let's start with the same concept, hash. IO stream. Int main. Okay, I need an queue of size 5, 1, 2, 3. Okay, and then I need front is equal to, it will be 0 at index 0, 0, 1, 2, ठीक है, और एक नंबर int now. So when मैंने ये लिखा, it will be created in queue, okay, okay, so 1, 2, 3, 0, 1, 2, so your front is 0, your rear is 2. ये आपकी क्यू बन गई, मेमोरी में इस तरह बनेगी। नाउ वी वांट टू रिमूव फर्स्ट, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है क्या है, आपकी ये नल है, तो क्या कर, सी आउट कर दे, क्यू इज अंडरफ्लो ओवर में बात है, अंदर में नहीं जी, एंड रिटर्न 0। रिटर्न कर दे भाई, एंड कर दे फंक्शन को, जो खाली तो आगे कुछ ना चले ही ना, स्टॉप इट। अगर नहीं, इफ इन दिस सिचुएशन दिस इज फॉल्स, फ्रंट 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू -1, फॉल्स है। स्टेप 2, नम क्यू कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, जो फ्रंट पे है, दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट है फ्रंट। फ्रंट की वैल्यू क्या है, Q80 क्या पड़ी है, 1, और वो 1 किसको मिल जाएगी, अब आपका जो नम है ये 1 है इसके पास। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी आउट, राइट डाउन दिस वन, नम is रिमूव, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, ये नम को दे दिया और हमने लिखा कि ये नम 1 हैज बीन रिमूव। अब क्या करना है, जब ये रिमूव हो गया तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 करनी है, यही है। तो क्या लिखेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट आपकी अब क्या हो जाएगी, 1। ओके, नाउ वी आर चेकिंग स्टेप नंबर 5। ओके, इफ ग्रेटर देन रेयर है, तो क्या कर, फ्रंट को भी नल कर दे -1 एंड रेयर को भी नल कर दे। But in this situations, value of current is 1, rear is 2. This if will not execute. और finally आपका ये वैल्यू रिमूव हो जाएगा और आपकी F1 होगी, इसको पॉइंट करेगी, और R इसको पॉइंट करेगी, ठीक है। अगर अगेन दोबारा चलाएंगे तो क्या करेंगे, अब फ्रंट यहां पे है, तो फ्रंट की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। यहां पे आएगी, ये फॉल्स है,
फिर यहां पे है Q8 फ्रंट की वैल्यू 1 है, 1 पे क्या पड़ा है 2 नंबर को मिल जाएगी, ये नंबर को 2 मिल जाएगी। देन मैसेज आएगा 2 हैज बीन रिमूव्ड, देन वैल्यू ऑफ फ्रंट विल बी इंक्रीज्ड 1 + 1 अब हो जाएगी 2। अब फ्रंट इसको नहीं बल्कि इसको पॉइंट करेगा 3 को। ओके, तो यहां पे 2 इज ग्रेटर देन 2, नो। ओके, लेट्स सपोज अगेन हम फ्रंट की 2 अगेन ये कोड चलाना चाहते हैं, फ्रंट इज नल, नो। यहां पे है Q8 फ्रंट 0 पे क्या फ्रंट की वैल्यू क्या है 2 पे क्या पड़ी है 3 विल बी असाइन टू नम, इट विल डिस्प्ले मैसेज 3 हैज बीन रिमूव्ड, देन फ्रंट की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 क्या होगी, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। तो यहां भी आ जाए फ्रंट की वैल्यू 3, रेयर की वैल्यू क्या 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो फ्रंट को भी नल कर दे, इसको भी नल कर दे, आपका ये भी रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया तो नल हो गई ना, तो फ्रंट भी नल, रेयर भी नल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर?